audio is audible. Hello everyone. Let me know if my voice is audible or not. Okay. 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 So welcome to today's session of certified ethical hacking. Um, Good morning. Yeah, morning everyone. So I have shared one installation link. This YouTube video link of installation guide for Parrot operating system in VMware in Windows. I hope you got it. Kindly follow that tutorial and install the Parrot operating system. Okay. The version of Parrot we are using is Security Plus. That is the version which we need to use. Okay. Okay, so just install the particular Parrot operating system in VMware and we are good to go for the other practicals. So what module did we cover in the last session? Any one of you? I think enumeration, right? Let me know. I think we did enumeration practicals, right? Yes, yes. Okay. So no, we did the particular practical. I asked you to do the assignment and use the other tools. Okay, the LDAP we did, and the others you need to do from your side, as all the softwares is mentioned in the lab manuals. Okay. Okay. So everyone, till now we have discussed about the phases like introduction, footprinting, scanning. Okay, and we are able to gather different information about our target. Okay, so uh, today we will be seeing one last practical from enumeration. That was, I think, uh, yeah, SNMP. No, it was not SNMP. I think it was related to. Let me check which was that. Yeah, it was like, I think, DNS, SMTP, and NTP. Yeah, so these will do. They are the left outs of the enumeration, and that will finish out today, and we'll start our next module, which is vulnerability analysis. 6.0 virtual box. Mukesh, that's like, just go with the latest version of virtual box. Okay, any version you can download. If this Parrot installation is not happening on virtual box, just go with virtual player. Okay, if it is not supporting, अगर support नहीं कर रहा तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपका system configuration अगर नहीं है तो, because system configuration आपका ये AMD वगैरह काम नहीं करेंगे. अगर आपका AMD का कोई चिपसेट है, then it won't work. अगर एडवांस नहीं है आपका, अगर तो AMD का अगर आपका बेसिक वर्जन है तो वर्चुअल मशीन सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है, because of virtualization technology is not enabled. VTX, how many of you got some kind of VTX error? Anyone? VTX error, any one of you? Only one? Okay, generally what happens by default, VTX is disabled in laptop computers by default. Okay, VTX means virtualization technology. Okay, so if you don't enable the VTX, you won't be able to use the VMware or any virtual box player. Okay, so VTX needs to be enabled. And how to enable VTX? Once you boot your laptop, you need to go to BIOS. Okay, for different laptops brands, the BIOS menu, the button for BIOS menu is different, like F8,
is for Lenovo, F2 for HP. Yes, those who are having different brands of laptop can comment in the live chat so that others can also get to know what button is used for which BIOS. Okay, so yes, like if someone is using HP, they can comment their buttons. If someone is using Dell, they can comment their buttons. If someone is using, I'm not only asking for the brand, I'm asking for the brand along with the keys which is used to go to BIOS menu. Okay, the keys used to, yes, like Dell. So Aman Dell, he used F12 to go to BIOS menu. Yeah, just like that. Others, okay, Asus escape button is used. Lenovo F8 is used. Okay, so like that. Once you go to BIOS menu, there is an option to enable the VTX. Once you enable the VTX, the error of the VTX from VMware will fixed. Okay. So yes, for different laptops brands, the keys are different. Once you boot, you will see press this button to go to BIOS. That option generally comes automatically. Okay. Or you can search on the internet also regarding your brand of laptop. Okay. Okay, so this is how we go to the BIOS menu and enable the VTX, those who got the VTX error. So let's now jump directly into the left out practicals. Left out practical of enumeration, where we'll be finishing out the left outs. So let's directly log in. Okay, how many of you want CHV11 certification by EC Council? Any one of you? Oh, how many of you know about EC Council first of all? Anyone knows about EC Council? Okay, so basically EC Council is a organization who are the world leader in giving cybersecurity courses. World leader. We are also certified from EC Council. So EC Council is a very big organization based in USA. They have various courses. One of the courses CEH, Certified Ethical Hacking, which you are learning right now. Okay, this is the CEH course. So right now the course which you are learning is only having certification from our institute. Our institute means like national level certification you will be getting. So EC Council certification gives you global level certification, global level uh, certification, which you can use for jobs abroad also. Okay, like in Singapore, USA, and as a fresher, even if you get the CEH certification from EC Council, you will be getting a starting salary of $90,000 per annum. Around six, once tens, 100,000, 10 lakh, 10 lakh. Just imagine. This is the annual salary of a CEH certified hacker. If you do at right place, if you choose right company. So for the CEH V11 certification, generally the cost of the examination plus the course is around $550, which comes around 41,000 rupees. Okay, but we are having partnership with the EC Council, and we are eligible to give this course as 34,000 rupees, only $452. Now this 34,000 rupees includes EC Council certified training and EC Council exam voucher. Exam voucher is a kind of a voucher which you need to redeem to give examination of around 4 to 5 hours of examination is there. And once you pass the examination, you'll be getting a CHV11 certificate, which is enough for getting an entry level job with a good amount of salary. This is how a certificate looks like of CHV11. Okay, it's a US recognized institute. So those who want to get CHV11 kit, they can contact us.
If you want, you can get a EMI also on this particular course with 0% interest. Yes, like if you want to get a 9 month of EMI, like you can pay around 34,000. You can pay 3,700 rupees per month for the 9 month of period, and you can do this course. You don't have to pay any interest if you get a no cost EMI option on this course. Okay, so those who are interested can ping me on Telegram or on WhatsApp asking for CHV11 kit. Okay, let's start. So we are into the iLab, and let's start the enumeration lab. Amount of certification is 34,000 rupees. Yes, a virtual lab is free with the course. Yes, the lab which I'm using here, it is free with the course. By paying 34,000, you will be getting the examination kit, the training, and the iLabs. This is the number. You can WhatsApp here, or you can drop your number in the live chat so that I can pass your numbers to our course counselor. They can contact you. Okay, those who are interested can drop your phone numbers in the live chat. Our course counselor, they will call you back and they can explain you about the CHV11 course. So let's perform the enumeration, the left out. Course period. Course is of 45 days. 45 days of course. A voucher you can redeem within 1 year. Okay. Once you finish the course, you have 1 year of time to redeem the voucher for examination. iLab, you will be having 6 months of access from the starting date once you redeem it. So it's not necessary that once you finish the course, you need to give exam. You can give off within 1 year. And we also help you giving the examinations. We right till now we are having a average 96 percentile. 96 percentile is the average percent our students are getting in the CEH examination till now, not less than 96. Those who want to get the CHB11 certification, they can leave their contact number in the live chat. Okay. So let's proceed with the NFS. So in the last class, we discussed what is NFS. NFS stands for Network File System. Okay, like the Z drive. The Z drive is shared here, right? This is shared from which computer system? From Windows 10 Z drive. Like based with the help of the NFS, this file is shared in the network. Now, once we do the NFS enumeration, we'll be able to get lots of shared file systems across the network. Okay, and for that we can use RPC scan and super enumeration. So RPC scan communicates with the RPC. RPC stands for remote procedure call. Like you have used TeamViewer, you may have used AnyDesk, you may have used different versions of remote systems. So what happens now? If you use TeamViewer, you are able to see or control the screens of your other machine where the TeamViewer is installed. Correct? That is done with the help of remote procedure call, RPC. Okay. Now remote procedure call helps you control the other systems remotely. With also you can manage the files and folders of the other system, right? So with the help of NFS, network file system protocol, these things are done. So now we'll be scanning the system and we'll be looking for RPC. So first thing, RPC NFS port number is 2049. So how can we check whether the port number is open or not? Any one of you? How can we do that?
No, not ping. Ping is used for checking whether the server is live or not. I'm asking about how can we check whether the port is alive or not. Yes, with the help of nmap scanning. So what we'll do, nmap hyphen p following by the port number, following by what, IP address, and we'll be able to scan the particular target whether the port number 2049 is open or not. If it is open, we'll proceed further. Now, NFS service is not enabled by default on every servers. So in our case, we'll be using Windows Server 2019. And here, NFS is not enabled by default. Okay, we need to enable it. Got it? So let's enable it. So once you install Windows Server, like like I told you to install VMware and Parrot, but you also need to install Windows Server 19 and 16 to do practicals. And your system might not be having that much of configuration, so I suggest you to buy the iLabs for better practical. You need to invest some money in order to learn something. Okay, now, so in Windows Server 2019 or 16, search for Server Manager. Okay, in the Server Manager, we need to add roles and features. Like this is a IIS server. Everyone knows about Windows Server, right? I explained in the last session. Yes, no? I explained about Windows Server and Linux Server. So everyone, it's clear, right? Because right now we are doing Server Manager changes, server configuration of Windows Server. So you must not have any confusions on what is Windows Server. Okay, so this is the Windows Server dashboard, the manager screen. So here we need to add some roles and features. So click on next, click on next, click on next. So here you need to click on file and storage services. And here you can see server for NFS is unchecked. We need to check this. This will enable the NFS, network file system. So add feature, click on next, next. Okay, and I think we need to install. So the feature is getting installed. Wait for a few minutes. Now with the help of this, the NFS will be enabled. Yes, this feature we need to be enabled on the target system. अगर ये feature enabled नहीं है target machine में, तो we cannot do NFS enumeration, right? Because NFS is an optional feature, and if someone enabled this optional feature on their server, then we'll be able to scan and enumerate it. So अगर हम ये feature enable नहीं करते तो क्या होता? Port number close आता. Once we do the nmap scanning, what will be the result? The result will be like the port number is closed or filtered, right? अब हम करेंगे तो हमको आएगा open. तभी तो हम ping, मतलब तभी तो हम packets भेज पाएंगे NFS के through. So okay, the installation is done. So let's close it and let's go to Parrot. वो हम Parrot को as a attacker machine use करेंगे यहाँ पे. We'll be using Parrot as a attacker machine. And what is the first thing we'll do? Obviously, the nmap to scan for the particular port number. हम लोग चेक करेंगे कि वो पोर्ट नंबर ओपन है कि नहीं. Yes, right. So first thing is to make ourselves root user. There are some network issues. Just wait. चलो. So sudo su. अब हम हो गए क्या? Root. Yes, victim machine should have NFS enabled. So we are now a root user. Now we can use all the commands without any issues. So हम लोग use कर रहे हैं nmap
-p 2049 जो है वो NFS का पोर्ट नंबर है, ठीक है। और टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है? 10.10.10.19। लेट्स स्कैन। नाउ व्हाट वी सी, स्टेट इज ओपन एंड सर्विस रनिंग इज NFS। अगर यही चीज क्लोज रहता तो ये चीज हमको क्या आता? स्टेट इज क्लोज्ड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। नाउ वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन। Now the next thing what we need to do is we need to enumerate the NFS services. Okay, so how to do that? Well, we need to use two softwares here. One software is known as superanum. Superanum means superannumeration, and the other software is RPC scan. Okay, superanum and RPC scan. Now with the help of superanum we will be enumerating the target forcefully. Okay, whatever the information we have there in the server, whatever we have the information on the NFS, we need to enumerate all those things. Okay, okay, so let's use the particular first tool which is known as superanum. Okay, so superanum जो tool है वो by default parrot में रहता है अवेलेबल, ठीक है, हमको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सो अभी हम लोग यहाँ इस डायरेक्टरी में चेक करते हैं कि यहाँ पे superanum फोल्डर है कि नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज हियर, आई नीड टू गो टू रूट, आई थिंक सो। यस, नीड टू गो टू रूट। सो रूट कैसे जाते हैं? एनी वन ऑफ यू? CD और क्या? मेरे को जाना है रूट फोल्डर में, तो कैसे जाएंगे? No, that is to make ourselves super user. Sudo su is used to make ourselves super user. I need to go to the root folder. CD slash, yes, correct. CD slash, like this. Now we are in the root folder. जो भी उस सिस्टम का root folder है, we are into that. I think यहाँ पे हम लोग का superanum नाम का फोल्डर जो है पैरेट में अवेलेबल रहता है। Let me check that. I think हमको जाना होगा थोड़ा और अंदर। अब हम हिडन फाइल्स को भी देख सकते हैं। So CD, let me use this for, now we are into the particular folder where these things are available. You can also check क्या क्या है इस फोल्डर में अवेलेबल। You can see जो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स भी है, जो डॉट से डिनोट किया हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं, राइट। तो यहीं पे हम लोग का RPC स्कैन और सुपर एनम जो है वो अवेलेबल है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है iLab में, बट नो वरीज। सो CD super enum, we are into this folder, and now just type the command like this, super enum. Okay, permission denied, sudo. Okay, no, first of all we need to create the list of target. Sorry. So अभी हमको क्या करना है? पहला चीज टारगेट का एक txt फाइल क्रिएट करना है, बिकॉज सुपर एनम एक ऐसा टूल है ना जहां पे हमको टारगेट का एक फाइल और फाइल का नेम देना होता है। तो हम क्या करेंगे ना, 10.10.10.19 जो है उसको target.txt नाम का एक फाइल बनाएंगे और उसमें सेव कर देंगे। तो एनी वन ऑफ यू, हाउ कैन वी डू दैट? क्या क्या तरीके हैं? एक तो तरीका मेंशन किया हुआ है स्क्रीन पे ही, बाकी क्या तरीके हैं? कैसे हम एक नया फाइल बना सकते हैं पैरेट में, लिनक्स में, और उसके अंदर कैसे हम टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं? एनीवन? gedit, yes. touch, okay, yes, right. anyone of you else? others? हाँ, तो ये कुछ तरीके हो गए जिसके हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। हाँ, vim भी है, करेक्ट, vi भी है। vi एडिटर के बारे में तो सुना ही होगा बहुत लोगों ने, राइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके हेल्प से हम लोग ये जो फोल्डर्स हैं
No, no, Akash, mkdir is used to make a directory, not a file. Okay? जो कमांड आपने बोला mkdir, that is used to make a folder, not a file. हमको यहाँ फाइल बनाना है, ठीक है, target.txt फाइल बनाना है. यस, नैनो ऑल्सो इज यूज्ड, करेक्ट. ठीक है. एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो ये है, वी कैन टाइप इको. ओके. इको के बारे में कितने लोगों को पता है यहाँ पे, व्हाट इज इको? एनी वन ऑफ यू? Well, echo is a very popular kind of stuff which is used in every programming language, right? अगर आप PHP का कोड जानते हो, if you know Python, if you know C++, so echo or print या तो printf, that is used every time, right? Yeah, it is used to print something. So echo, then following by the text which you need to echo, where in a new file. So यहाँ पे हम देंगे फाइल का नाम. अगर ये फाइल नाम वहां पे है तो उसी में ये एडिट हो जाएगा, अगर नहीं है तो न्यू क्रिएट हो जाएगा. ठीक है ना. प्रेस एंटर. तो अब ये फाइल क्रिएट हो गया होगा, जिसको हम चेक कर लेते हैं. लेट्स चेक. तो target.txt नाम का फाइल बन गया है. और मुझे देखना है इसके अंदर कंटेंट क्या है. तो क्या कमांड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? एनी वन ऑफ यू? आई नीड टू सी व्हाट कंटेंट इज इनसाइड target.txt. यस. So you can see with the help of cat command, we can see what is inside the particular txt file. Yes, other commands also we can use. ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इस पर्टिकुलर टारगेट फाइल को हम सुपर एनम में कॉल करेंगे. सो सुपर, सो वी नीड टू यूज sudo सुपर एनम. ठीक है. कमांड नॉट फाउंड. ओके. ओके. सो व्हाट हैपनिंग हियर इज, जो ये कमांड हम यूज कर रहे हैं सुपर एनम, इसका जो परमिशन है ये है rwrr. What is the meaning of this? Any one of you? We can see the permission here is rw. Yes, read and write. There is no permission to execute. ठीक है. जब तक execute permission नहीं होगा तब तक हम इसको रन नहीं कर पाएंगे. क्लियर. सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको execute करने का permission देना होगा, x ऐड करना होगा इसमें. उसके लिए एक सिंपल सा कमांड है chmod, यानी कि change mod plus x following by the file name. ठीक है. डन. And now let's check permission change हुआ कि नहीं. You can see super enum is now having the x also. Execute permission is also added in here. Now let's do the same step. So now what you see, enter IP list file name with path. So target.txt जो है हम लोग का वो path का name है, and we need to type that target.txt. इसी के अंदर IP address है ना, and press enter. Now you can see TCP scan started. अब जितने भी enumerations possible हैं वो सारे के सारे एनिमेशन ये सॉफ्टवेयर जो है वो चालू कर देगा करना. अब इसमें टाइम लगेगा. ठीक है. इट विल टेक सम टाइम. सो इफ द NFS इज ओपन, दिस विल गिव अस गुड रिजल्ट्स. ओके, यू कैन सी इन द स्क्रीन what results we'll be getting here is like this: testing for particular IP address following by other port numbers, for RPC also, SMB also. Okay, and it will take good amount of time. So we'll wait for that. हम लोग वेट करते हैं उसके रिजल्ट्स का. So ये हमको क्या देगा, सारे सर्विसेज जो रन हो रहे हैं ना उसका इन्फॉर्मेशन दे देगा. और हमको क्या पता लगाना है इसमें से, हमको पता लगाना है NFS का सिर्फ. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है कि NFS का रिजल्ट मिला है, हमको भी इसी रिजल्ट का वेट करना है 2049 का. सो लेट्स सी. जैसे हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, हम लोग अपना RPC स्कैन का यूज करना जो है वो शुरू कर देंगे फॉर अदर रिजल्ट्स ऑल्सो. ठीक है. So let's wait for that.
So 5 minutes वेट करते हैं, लेट्स वेट. इन मीन टाइम अगर आपको CHV11 के कुछ कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स तो आप आस्क, यू कैन आस्क रिगार्डिंग द किट्स एंड ऑल. Cost of iLab. iLab is around 7,400 rupees. Can we do this course if you are beginner? Yes, yes, you can, you can. ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स का मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, लेट मी शो यू. आपको मैं शो ही कर देता हूँ. CEHV11 minimum age. कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा. वो 18+ है, ठीक है. 18+ अगर आप हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो. इधर ही कहीं वेबसाइट में मेंशन्ड है. Yes, same topics are available in CEHV11 certifications which you are learning right now. I paid for special course. What is special course? That's not a special course. That's a membership. Exam procedure. Okay, so once you finish the course, uh, you need to redeem your exam voucher. Okay. So once you purchase the kit, you get a kit from EC Council with a voucher number mentioned in the email. Okay, with the iLab key. So जब आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा, once you finish the course, you need to log on to EC Council online examination portal, and there you need to redeem your exam voucher. Once you redeem your exam voucher, you have 1 year of time to attend the examination. Okay, like it is, the examination is of around, I think, CEH exam 4 hour examination. It's there with 125 multiple choice questions. Okay, so attempt, like I think it's based on it's on us only. We can mail them a maximum of 2 or 3 times. We can mail them for a reattempt. Okay, but that's not how it happens. Like आपके पास 4 घंटे का टाइम होता है, 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, and one of our exam counselor will be there with you once you attend the examination. Okay, so throughout examination आपको कोई issue नहीं होता है, and you will be able to easily crack the examination. No, hack the box is something different, but I will cover it छोटा सा. Yes, there is also one more exam known as CHV11 practical. वो क्या होता है? तो ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये पहला वर्जन है एग्जाम का. दिस इज CH थ्योरी एग्जाम. Here you will be getting 125 multiple questions. Okay, this is a multiple question type thing. After completion of this examination, you will be eligible to give CH practical. CH practical is an examination where everything you need to do as a practical only. Okay, no theories, nothing at all. आपको कहा जाएगा कि ये practical करो, वो स्कैन करो, ये स्कैन करो, और वो बहुत ही हाई लेवल का होता है. ठीक है.
तो वो 1 साल 2 साल बाद आप कर सकते हो CEHV11 का थ्योरी एग्जाम देने के बाद, जब आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना है। तो आप में जितने लोगों ने नंबर्स जो शेयर किए हैं, you will be getting a call back from our team and you can just opt for CHV11 if you want to. Yes, like आप जो अभी कोर्स कर रहे हो उसमें एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं है। दैट इज द सेम करिकुलम विच इज देयर इन द CHV11, सेम चीज है। बट जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना वो हमारे साइड से मिलेगा, और हमारे में और इसी काउंसिल में डिफरेंस है, राइट? इसी काउंसिल इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हम लोग एफिलिएटेड हैं। तो अगर आप एग्जाम देके करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट का वैल्यू है बहुत ज्यादा रहेगा, बिकॉज यू अटेम्प्टेड एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चंस दिए गए और आपने उसको क्रैक किया। इट्स लाइक यू कैन से नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, बट आपका किसी का कंपटीशन नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप 96% लेके आ जाते हो या तो 95% भी आते हो लेके, या तो 90 के ऊपर ही रहे, तब भी आपका जो जॉब है ना एज अ फ्रेशर, यू कैन गेट अ सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम $45,000 स्टार्टिंग। ओके, मेंबरशिप के तो मैक्सिमम मेल्स जा चुके हैं, बट स्टिल इफ यू हैवंट रिसीव्ड एनीथिंग, kindly WhatsApp on this. I have sent you a direct message, WhatsApp on this number. For practical exam, we want to pay again. Practical exam, it's not practice. या practical exam different है. Yes, उसके लिए आपको obviously पे करना पड़ता है। वो $100 या $150 का एग्जाम होता है दोबारा। वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है टू अपस्किल योर नॉलेज, टू अपस्किल योर सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा फ्रॉम थ्योरेटिकल एग्जाम टू प्रैक्टिकल एग्जाम। यू विल बी एलिजिबल टू गेट मोर सैलरी हाइक based on that. $100-150 मतलब का 7-8 हज़ार का अप्रॉक्स जो है एग्जामिनेशन चार्ज रहते हैं प्रैक्टिकल्स वाले एग्जामिनेशन के। और जो ये CHV11 थ्योरी है इसका 34,000 रहता है, इसमें कि आपका एग्जामिनेशन किट और आई लैब 7,000 का आता है, 7,000 का, तो उसमें इंक्लूड है, ठीक है? तो दोज हु वांट टू मेक करियर इन दिस फील्ड, जिनको पक्का है कि उनको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस। बिकॉज ये जो फील्ड है ना, ये ऐसा फील्ड है जिसका स्कोप बहुत अभी ग्रो कर रहा है। इसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन लाइक जैसे कोडिंग सेक्टर हो गया, बहुत कंपटीशन है वहां पे, बट साइबर सिक्योरिटी जो सेक्टर है यहाँ बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। इन थ्योरी एग्जाम वी नीड टू स्टडी थ्योरी और फोकस ऑन स्किल्स। अंशुल, लाइक आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, द क्वेश्चन विच विल बी गेटिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ, द क्वेश्चन विल बी लाइक समथिंग प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड होगा, बट आपको उसका जो आंसर देना है ना, तो बस मल्टीपल चॉइस में देना है, ABCD में से सेलेक्ट करना है बस। बट जब तक आप प्रैक्टिकली इस कोर्स को करोगे नहीं, तब तक आपको थ्योरी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। इफ यू डोंट नो हाउ टू टाइप nmap कमांड, हाउ कैन यू सेलेक्ट अ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन? अगर आपको नहीं पता है कि nmap-p पोर्ट नंबर फॉलोइंग बाय IP एड्रेस ये कमांड है, यही क्वेश्चन आ जाएगा फिर, व्हाट कमांड इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, विच वन इज करेक्ट विच वन इज रॉन्ग। बेस्ड ऑन दैट आपको वहां पे सिलेक्ट करना होगा। डिफरेंस बिटवीन इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग कैटेगरी, वो बहुत ही बड़ा कैटेगरी है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में टेस्टिंग आता है, बग बाउंटी आता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स आता है, फिर आप में उसमें ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं साइबर सिक्योरिटी में। उसी का एक पार्ट है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग क्या हो गया ना, ये जनरली इलीगल चीजों को सही करने के लिए, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ इलीगल चीजें हो रही हैं, उसको आपको पकड़ने के लिए आपको पता लगाना काम होता है एज एथिकल हैकर, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक अलग ही लेवल का कैटेगरी है। समवन हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वी हैव वन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोर्स ऑल्सो, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोर्स जो है, CSE या तो CSP कह सकते हैं उसको, साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा ना, तो जो आपको कॉल आएगा कोर्स काउंसलर से, यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क द पर्टिकुलर कोर्स काउंसलर।
CSP जो कोर्स है वो एक 5 कोर्सेज का बंडल है, लाइक पाइथन है उसमें, CHV11 है, कॉम्शिया का नाम सुना है आप में से कितने लोगों ने सुना है कॉम्शिया? एनीवन ऑफ यू हर्ड अबाउट कॉम्शिया? यस। सो कॉम्शिया जो है ना ये भी इसी काउंसिल की तरह ही है, तो कॉम्शिया का सिक्योरिटी प्लस कोर्स भी है उसमें, 3 हो गए। उसके बाद आपका CCNA नेटवर्किंग कोर्स है उसमें, देन यू हैव CSP, CCSP, ये 5 कोर्सेज का बंडल है टोटल। CSP कोर्स जो है जिसको कहते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी बंडल कोर्स, अगर ये कोर्स आपने कर लिया तो तब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए। इसके बारे में जानना होगा तो आप अपने कोर्स काउंसिल से पूछ सकते हो, जो आपको कॉल आएगा। आपने अगर नंबर शेयर किया अपने लाइव चैट में तो आपको आज में ही कॉल आ जाएगा। You can look what happens generally ना, once you become a cyber security expert or ethical hacker, आप ऑटोमेटिकली किसी एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो। एजेंसीज लाइक जैसे मैं ही बहुत एजेंसी से मेरा कांटेक्ट है, वंस दे गेट एनी काइंड ऑफ गिग, आई होप यू नो अबाउट गिग्स राइट, कुछ प्रोजेक्ट आपके पास आया तो लाइक कहीं इवेंट होस्ट हो रहा है, दैट इवेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी, या वेबिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, तो वो आपको इनवाइट कर लेंगे। बट उसी के लिए आपको प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये कोर्स किया है, राइट? अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है तभी आपको वैल्यू मिलेगा, तभी आपको इनविटेशन मिलेगा। और like for only one lecture you can get paid up to 4,000 rupees one session 1 hour. If you do the CHV11 we have a job assurance program also, हम आपका interviews set करवाते हैं different companies में, उस कोर्स में CHV11 में, there we can help you with the jobs. एंड यस, जो एक क्वेश्चन पूछा कि पुलिस साइबर क्राइम में हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो बट आप वॉलेंटियर करोगे, ठीक है? आप खुद से जाके अपना ऑफर दोगे कि हाँ मैं वॉलेंटियर करना चाहता हूँ, आई आई वांट टू लुक इनटू द साइबर क्राइम केसेस, जैसे कि I'm from Bangalore, I look into various cyber crime cases of Bangalore police, so I volunteer, I don't ask for money, I volunteer. When will we learn system configuration which cannot be hacked? Anilesh, you will learn by the end of the course only. तभी जाके आपको एक समराइज होगा कि कैसे क्या करना है. What else can we do to enhance our skills in ethical hacking? Anshul, practice. Okay, practice ही है that will help you out to enhance. Okay, let's finish out this particular thing. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we are able to get port number 2049 that is open and NFS services are running in here. Okay, NFS services running in here, so that is clear that we are able to find details about the NFS कि वो run हो रहा है. Now let us quit this. इसको हम quit करते हैं. So we verified that NFS is running okay, and इस particular IP एड्रेस पे 2049 पे हम लोग डिफरेंट पेलोड्स का यूज कर सकते हैं उसको एनुमरेट करने के लिए, ठीक है? तो एक और वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, that is with the help of RPC scan. So let's go to RPC scan and let's use the command. So ये एक पाइथन का टूल है, ठीक है? So यहाँ पे देख सकते हो ना, nfs get nfs ls, ये जो टूल्स हैं, ये जो पाइथन स्क्रिप्ट है, that is used for enumeration of NFS. Okay, enumeration of network file system. Okay, so let's see how can we do that. So we can type python 3 rpc -scan .py rpc-scan.py following by target IP 10.10.19 10.10.10.19. That's it, and --rpc remote procedure call and hit enter. So what we see that yes, remote procedure call is running on NFS 1 2 3 4 5 on UDP port. So इतना हमको कंफर्म है कि यहाँ पे रिमोटली हम इस सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? रिमोट प्रोसीजर
कॉल इज रनिंग ऑन दिस सिस्टम। अब इसके आगे हम और इंफॉर्मेशन जो है गैदर करेंगे, दैट विल सी इन दी वल्नरेबिलिटी एंड सिस्टम हैकिंग। ठीक है। कोडिंग्स, आई एम नॉट यूजिंग एनी कोडिंग्स, मैंने कोई कोड यूज नहीं किया है। ये कमांड्स हैं, ये कमांड्स तो आपको याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। ठीक है, करते करते आपको याद होगा ना ये सब चीज। So we are able to see that NFS is running and we can enumerate and we can get more information on this. So ये एक procedure हुआ that how to look for NFS services running or not and whether TCP port और UDP port पे run हो रहा है कि नहीं हो रहा है, that also we can see NFS running on TCP, TCP, UDP, UDP. Okay, that's it. That's how we enumerate NFS. ठीक है, so NFS enumeration is done. ओके, डीएनएस एनुमरेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ था डीएनएस चेकर से, सेम थिंग। डीएनएस चेकर जो हम लोगों ने यूज किया था, रिमेंबर वी यूज डीएनएस चेकर वंस, डीएनएस चेकर, राइट। सो ये जो वेबसाइट है ये सेम है, यहाँ पे भी हम लोगों ने डीएनएस का इंफॉर्मेशन एनुमरेट करने का ट्राई किया था। ओके, यू कैन सी लाइक दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग इन दी प्रैक्टिकल हियर आल्सो, डीएनएस एनुमरेशन। ठीक है, डीएनएस हो गया। देन आरपीसी एंड एसएमबी और एफटीपी का एनुमरेशन हम लोग का बच जाएगा, that we'll see in the next class because ये थोड़ा बड़ा practical है। So let me explain you first what is SMB and FTP. SMB stands for simple message block. What is simple message block? Simple message block भी जो है communication के लिए use होता है between multiple computers. And what is FTP? Any one of you? What is FTP? Yes, file transfer protocol. What is a file transfer protocol? Basically, a file transfer protocol is used to transfer a file on a server. जब सर्वर पे फाइल्स को अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो या एडिट करते हो, दैट टाइम यू नीड टू यूज द एफटीपी प्रोटोकॉल ओनली, लाइक फाइलजीला। आई होप यू मे हैव हर्ड अबाउट फाइलजीला। तो जब आप सर्वर परचेज करते हो, वंस यू गेट अ सर्वर, लाइक शेयर्ड होस्टिंग हो या तो वीपीएस हो या तो डेडिकेटेड सर्वर हो, एंड वंस यू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम देयर, चाहे वो लिनक्स हो चाहे वो विंडोज हो, देन यू कैन क्रिएट एफटीपी अकाउंट। जब एफटीपी अकाउंट क्रिएट करते हो ना, देन यू गेट एन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर फोल्डर और रूट फोल्डर, वहां पे डिपेंड करता है। देन आप सॉफ्टवेयर्स लाइक फाइलजीला, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से आप एफटीपी के थ्रू अपने सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद योर सर्वर्स विद द हेल्प ऑफ एफटीपी क्रेडेंशियल्स, वेयर यू कैन अपलोड अ फाइल, डाउनलोड अ फाइल, एडिट अ फाइल। यू डोंट नीड टू लॉग इन ऑन टू योर सर्वर, आपको सर्वर पे लॉगिन करने का जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दी एफटीपी क्रेडेंशियल्स। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आपको एफटीपी एनुमरेशन आपने कर लिया, मतलब आपको एफटीपी के यूजर नेम्स मिल जाएंगे, आपको एफटीपी के पासवर्ड नहीं, आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे, तो एक चीज तो श्योर होगा ना कि दैट यू आर हैविंग समथिंग टू हैक। व्हाई वी आर डूइंग दीज स्कैनिंग्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टू गेट समथिंग टू हैक। तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे आरपीसी में, एसएमबी में और एफटीपी एनुमरेशन में। ठीक है, तो एफटीपी एनुमरेशन वाले में थोड़ा टाइम लगेगा। सो व्हाट विल डू इज, एवरीवन, आई एम गिविंग यू टुडेज टाइम टू इंस्टॉल दी पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इन वीएमवेयर। जिनके पास नहीं है वो लोग आज इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि कल जब हम ये प्रैक्टिकल करें तो आप भी साथ ही साथ ये करते रहो, और जब कोई डाउट हो तो आप क्लास में ही पूछ सको। ओके, सो विंडोज, लिनक्स, विंडोज इज, या विंडोज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लिनक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सब जरूरी है। ठीक है, ये एक ऐसा चीज नहीं है कि दैट यू नीड टू डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नीड टू यूज ऑल ऑफ देम। जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे आपको उबुंटू भी यूज करना पड़ेगा, और एडवांस जाओगे तो आपको अपने इसका नाम सुना है कि नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट ओएस्प? वेल,
ओएस जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी बिग सिक्योरिटी फाउंडेशन, साइबर सिक्योरिटी में जो बहुत ही पॉपुलर है। तो ओएस का भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे लिनक्स पे ही है, जहाँ पे ओएस ने बहुत ही पॉपुलर पॉपुलर ओएस बेस्ड टूल्स को एक साथ डाला हुआ है फॉर इथिकल हैकिंग एंड ऑल। सो ओएस ना बहुत से हैकर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ओएस एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इनके पास टॉप 10 हैकिंग टूल्स, टॉप 10 पेनिट्रेशन टेस्टिंग, टॉप 10 वनरेबिलिटीज का लिस्ट आते रहता है। सो यू कैन फॉलो ओएस ऑल्सो। विक्टिम मशीन के लिए कौन से ओएस यूज करने हैं वीएम मशीन में? नॉट फॉर विक्टिम मशीन, लुक, आप VMware में यू नीड टू हैव Windows 10, ठीक है, बिकॉज अपने विंडोज में आप मत अटैक करना कभी भी। वट एवर यू डू यूज इन VMware ओनली। अगर अपने सिस्टम पे अगर करोगे आप, आपका ऑलरेडी विंडोज आपके पास प्राइमरी मशीन है, इफ यू ट्राई टू यूज देयर यू मे लूज ऑल एवरीथिंग। आपका सिस्टम बहुत ही करप्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रखा है, मैंने VMware पे सिर्फ अटैकर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए थे और विक्टिम का मैंने अपना ही सिस्टम यूज कर लिया, सो बहुत से इश्यूज हुए। सो इंस्टॉल विंडोज या विंडोज 7 भी कर सकते हो, XP भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो एज अ विक्टिम ऑन VMware। Then you can use Windows Server 2019, Server 2016. Then you can install Parrot, you can install Kali Linux, you can install Backtrack, you can install Ubuntu और Android, ठीक है। ये कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला ना कि आपका सिस्टम इतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो आप iLab ले सकते हो। फेल टू ओपन अ सेशन फॉर द वर्चुअल मशीन। वेल मुकेश, आपका सिस्टम से कुछ इशू होगा तभी आपका ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। या तो आप इंस्टॉलेशन को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो आप टेलीग्राम पे। सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर यू आर गेटिंग ऑन टेलीग्राम, ओके, द सेम नंबर। So that's it for today's session, everyone. Minimum in configuration, you need to have at least 4 GB of RAM. I recommend to have 8 GB of RAM, okay. So RAM जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपका इंस्टॉलेशन होगा। So that's it for today's session, everyone. I hope you liked it. You can now leave the class and have a good day ahead. Thank you, everyone. Bye bye.